One of the best-known former militants in the valley is this man, 38-year-old Javed Shah, who made his first tentative experiment with elections this year from the constituency of Bandipur. After surrendering his arms in the 90s, Shah negotiated a seat for himself in the Legislative Council. But for many years he was an outspoken champion of more rights for the thousands of men he continued to control. ये तक सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट का ताल्लुक है। हमारे कुछ लड़के हैं, जैसे कि हमारे ग्रुप में हैं, कोई 1236 लड़के हैं हमारे ग्रुप में हैं। हमें तनख्वाह मिलती है, 300 एसपीओ को तनख्वाह मिलती है। वो वही बांटकर कंबाइन लंगर्स बनाए हैं, वही सिर्फ खाना खाते हैं और कुछ नहीं करते हैं। हाँ, किसी किसी जगह पर जब हमारे लड़के को ऐसी प्रॉब्लम होती है, चाहे उसके घर में बच्चा बीमार हो, वो एक्सटॉर्शन की हद तक भी जाता है, क्योंकि उसके साथ कोई दूसरा वे आउट ही नहीं है। मजदूरी जाने के लिए वो जाएगा तो वहां मर जाएगा। ये सब चीजें अगर क्रिएट होती है या गवर्नमेंट की गलत पॉलिसियों की वजह से क्रिएट होती है। और कई और जगहों पर जहां पर काम अच्छा होता है, उसका रिवार्ड भी मिलता है लड़कों को, अगर कोई अच्छा काम करे, और कई जगहों पर रिवार्ड भी खाया जाता है, और जहां रिवार्ड मिलता है उस पर भी गुजारा करते हैं। Visitors to his Srinagar house would always be shown this book, Bloodletting in Kashmir, that chronicled militant atrocities, but also the number of terrorists Shah and his ikhwanis had helped to kill. At the time, Shah went as far as to accuse the National Conference of being soft on militants and said his boys were suffering. मैं ये मानता हूं कहीं पर हमारे लड़कों की गलतियां हुई है, मगर जहां हमारे लड़कों ने कोई गलती भी नहीं की है, जहां पर चाहे वो गवर्नमेंट एजेंसी ने गलती की हो, चाहे वो मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन ने गलती की, वो भी हमारे लड़कों पर थोपी जाती है। क्योंकि इख्वान एक नाम वो है जिसको लोग भी रेस्पेक्ट नहीं करते हैं इन दिस वे कि उनके हमारे लड़कों ने जहां पर भी काम किया, किसी घर का मिलिटेंट तो मरा ही उनके हाथों से, या कि अगर वो किसी एजेंसी के साथ थे, चाहे वो सिक्योरिटी फोर्स थे, आर्मी थी, बीएसएफ था, टास्क फोर्स था, अगर हमारे लड़के किसी रेड में थे और वहां पर कोई आदमी मर भी गया तो उसका ब्लेम भी हमारी इख्वानी पर है, और वो भी उसको बदनाम करने का एक जरिया है। Today, Shah contested an election on a ticket given by the same National Conference, and perhaps sensing the mood among his people, made a deliberate effort to appear much more critical of his own clan. मैं भी ये चाहता हूं कि जितने भी क्रिमिनल इख्वानीज हैं, जिनके खिलाफ एफआईआरस हैं या जो क्राइम्स में इन्वॉल्व हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और एक तरह से वो क्राइम कर, दूसरे से उनके हाथ में हम गन भी दें, वो अच्छी बात नहीं है, क्योंकि क्रिमिनल ही होता है, चाहे वो आम लोग हो या इख्वानी हो। और क्रिमिनल के खिलाफ एक्शन होनी चाहिए कानूनी तौर पर, और उसके हाथ में गन रखने किसी किस्म का जवाब नहीं है हमारे पास। And the irony missed no one when minutes after sharing a stage with Javed Shah, National Conference President Omar Abdullah declared that he would push for disarming the Ikhwanis. I would love to have the Ikhwanis disarmed. In fact, that is one of the things I have taken to Sumbul and Sonawari. I want to see either the Ikhwanis disarmed or the Ikhwanis recruited into the Indian Army and made legitimate soldiers. But this is something the Indian Army will have to answer for, because the Ikhwanis do not function under the government of Jammu and Kashmir. They function under the government of India, Ministry of Defence. Workers don't roam around with guns. Who protects Mehbooba's workers? They don't roam around with guns, except for those who have some renegade militants with them. The Ikhwanis, if they want to be politicians, they must be politicians. If they want to be soldiers, they should join the army. If they want to be policemen, they should join the police. But they can't have their cake and eat it too. They must decide what they want to be. But they claim that they're very soft targets. They are soft targets. What about us? What about the police people? Ikhwanis have fired on police convoys. Unfortunately, I don't understand why it is the government of India, Ministry of Defence, has decided to overlook some of these atrocities and excesses of the Ikhwanis. But after the elections, my government will ensure that there is the full accountability. And sudden death is as familiar on the other side as well. Days before his election, one of Javed Shah's closest aides, Bashir Khan, was assassinated, and his security officer gravely injured as militants ambushed their car. उसको मिलिटेंटों ने मारा। अल-बदर ने ऑलरेडी, लश्कर और अल-बदर ने ऑलरेडी क्लेम किया है कि हमने उसको मारा, मगर अल-बदर और लश्कर वालों को हमारे यहाँ पर जो मेरे खिलाफ कंटेस्टिंग कैंडिडेट है उसने यूज किया।